गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम पीक इनटू एवरीडे चाइना में देखेंगे 9 क्रैशेस ऑफ द चाइनीज ड्रीम। 9 क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको हर ये 9 क्रैश जो हुए हैं चाइना के ड्रीम में, ये आपको गिनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि क्या चक्कर क्या है, चाइना में क्या हो रहा है। राइट। अब देखिए, यहाँ तो मैंने सिर्फ 5 ही दिखाया। 9 क्रैश, 9 पिन, 9 पिन ये गेम है ना, नॉर्मली बॉलिंग में करते हैं, वो है। और आप सोच लो कि जी जिनपिंग बॉल है या 9 पिन है, और जो भी है वो गिर रहा है। राइट, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसके जितना चाइना वाला ड्रीम वगैरह वगैरह है ना, चाइना का ख्वाब, वो खत्म। ओके। चाइना का ख्वाब क्या था? Rejuvenation of the Chinese dream. The rejuvenation of the Chinese dream was twofold. One, Taiwan to be captured, annexed, whatever, politically or militarily. Second part, the great Chinese nation will rule the world. The Middle Kingdom will establish a Sinocentric world order under Xi Jinping. Is that possible anymore? मेरे ख्याल में नहीं। ओके। पर आप देखिए, ये जो आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, खुद का उनका पेपर है, वो क्या लिखते हैं? China's three-legged race to fend off 4 Ds of an economic apocalypse, sorry. So it's China's three-legged race to fend off 4 Ds of an economic apocalypse. Look, I'm sorry, apocalypse. What are the dangers? Debt, deflation, de-risking, demographics. इसका मतलब, इसके मुताबिक ये तो क्रैश हो ही रहा है। Are at China's doorstep, threatening growth in its 17.67 trillion economy. उसके साथ property crisis, chilled consumption, weak momentum and broad lack of confidence. ये खुद बोल रहे हैं। सिर्फ हम इनको गिनाएंगे और बताएंगे आप सब लोगों को कि हो क्या रहा है। राइट। एंड ये भी बोल रहे हैं ये खुद कि इकोनॉमिक आउटलुक does not bode well for a return to normalcy in 2024. होगा नहीं। मेरे हिसाब से 2024 भी नहीं होगा, 25 में भी नहीं होगा, 26 में भी नहीं होगा, और उसके बाद जरूरी भी नहीं है इनको। और वो क्यों, अभी बताऊंगा। सबसे पहले क्रैश, पॉपुलेशन। देखिए, किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका आधार होता है। अगर आबादी नहीं है तो वो देश क्या है? तो चाइना में the thing which is threatening China most is the population. And population is something not many people talk of. उनका इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, उनका मिलिट्री के बारे में बात करते हैं, जी जिनपिंग के बारे में बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, और उनका आबादी के बारे में सही तरीके से बात नहीं करते। सब बोलते हैं आबादी घटेगा, क्या फर्क पड़ता है, रोबोट लगा देंगे। रोबोट लगा दोगे कि क्या होगा उससे? कितना रोबोट लगाओगे आप? क्योंकि आपका पूरा अर्थव्यवस्था आबादी के ऊपर। आबादी नहीं रहा तो क्या रहा? पर आबादी क्यों घट रहा है और किस तरीके से घट रहा है, ये देखिए। लोअर बर्थ रेट ऑन रिकॉर्ड तो आ गया इस साल। अगर आप इस चार्ट को नजदीक देखेंगे तो बड़ा क्लियर है कि इनका डेथ रेट बढ़ गया है, बर्थ रेट कम हो गया। जब ये होगा तो आबादी घटना शुरू हो जाएगा। ऑफिशियली ये इनका ग्राफ है, ऑफिशियली। सो पिछले साल से इस साल ये कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है ये देखिए। चेंज इन पॉपुलेशन 2016 से लेकर अगर आप अभी देखोगे तो धीरे 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 धीरे
लगातार पॉपुलेशन घटता जा रहा है। और ये मैंने एक चाइनीज वेबसाइट से लिया है और अभी नेगेटिव में है 2 मिलियन 2023 तक। पर इसको थोड़ा वापस बाद में आऊंगा। बात यह है कि हाँ ठीक है, पॉपुलेशन घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो उसको संभाल लेंगे। पर ये वक्त होना था 2030 में। ये आर्टिकल है चाइना का गवर्नमेंट का आर्टिकल है, ये चाइनीज में है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें बोल रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में कि भाई पॉपुलेशन तो घटेगा, घट रहा है, पर हमारा जो एक्चुअल घटन शुरू होगा 2030 में। पर यार ये तो अभी शुरू हो गया 2022-23 में, 22 में घटना शुरू हो गया। जो बात 7 साल बाद होना था अभी हो गया, फास्ट फॉरवर्ड हो गया ये। तो इसका परिणाम होगा और इस परिणाम को कोई देखता नहीं है। ओके, राइट। दूसरा, ये आर्टिकल कुछ दिन पहले निकला, चाइना's population with 20 million fewer people projected by 2035, राइट। तो ये सेकंड पार्ट मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट। तो इस इनके मुताबिक अभी ऑफिशियली कि 2035 तक सिर्फ 20 मिलियन लोग घटेंगे। इसका मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, ये वही काम में है जो पहले वाले में मैंने दिखाया। ठीक, ओके। तो पर असलियत क्या है, असलियत तो जानना चाहिए। और ये यूएन का ग्राफ है, ये यूएन के ग्राफ से मैंने ये फिगर्स निकाला है। ये फिगर्स मैंने आपको बहुत बार दिखा चुका हूं, पर ये ग्राफ है, मैं थोड़ा इन डिटेल समझा दूंगा। अगर आप देखेंगे तो 2023 में इनका पॉपुलेशन जो है 1.41 बिलियन नीचे है, और इसका एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। और 2030 में इनका पॉपुलेशन एज पर यूएन चार्ट 14.05 यानी 1.405 बिलियन होगा। और इसमें टोटल घटन हो है -5 मिलियन। और अगर आप देखेंगे 2030 और 2040 के बीच में एज पर यूएन चार्ट दे विल लूज 120 मिलियन पीपल, राइट। और इनका पॉपुलेशन और घट जाएगा, ये एज पर यूएन। और यूएन का चार्ट आर बेस्ड ऑन वो जो चाइना का जो उन्होंने बोला है, ये 2030 तक कुछ नहीं हो, पर ये शुरू हो गया ऑलरेडी। ओके, और अभी ये बोल रहे हैं क्या कि 2035 तक सिर्फ 20 मिलियन होंगे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, राइट। अगर हम अब इसी सच्चाई को थोड़ा, इन्हीं का चार्ट है ये अगर आप कैक्सन ग्लोबल में जाओगे तो ये चार्ट मिल जाएगा आपको, कैक्सन ग्लोबल या यीकाई, वन ऑफ द टू, उसमें मिल जाएगा, यीकाई में या कैक्सन ग्लोबल में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। 1 महीना पहले निकाला है इन्होंने। इसके मुताबिक, राइट, अगर आप देखेंगे 2016, 17, 16, 17 और आगे देखोगे, पिछले 6 साल में 10 मिलियन पॉपुलेशन घट गया है। अगर अगले 5 साल में यही हिसाब लगाओगे, राइट, इसमें लगाओगे तो 5 साल ये तो कम है, 10-15 मिलियन और घट जाएगा। अगर यही फास्ट फॉरवर्ड अगर आप ले जाओगे तो दिस 120 मिलियन विल रीच बाय 2035। 120 नहीं है तो कम से कम 80-90 मिलियन खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसे होता है किसी देश में, तो फिर व्हाट इज द सोशल इंस्टेबिलिटी व्हिच विल कम? Everyone says, oh, they might not have enough people to work. They'll use robots to work and increase productivity. भाई प्रोडक्टिविटी तो आप इंक्रीज कर ही दोगे, पर उसके बाद आप कंजम्पशन कौन करेगा, इसका सामान कौन खरीदेगा? लोग चाहिए ना कंजम्पशन के लिए।
वो तो हो ही नहीं रहा. So population is a major crash in China and it is happening at a much faster pace than we imagine. और मेरे ख्याल में अगले 2-3 साल में ये बिल्कुल हर दूसरा दिन हेडलाइन होगा. उनका सोशल टेंशन शुरू होंगे. दूसरा क्रैश, स्टॉक क्रैश. ये देखिए, ये बुल कुछ बोल रहा है, ये यार इसको क्या हो गया, ड्रैगन तो नीचे डुबक रहा है. ठीक है. और चाइना का मार्केट जो है ना, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है इस कार्टून के अंदर. थोड़ा नजदीक भी देखिए. चाइना मेल्ट डाउन, स्टॉक मार्केट सब डाउन. सो सेकेंड क्रैश ऑफ चाइना इज द स्टॉक मार्केट क्रैश. ओके, व्हाट डज दिस से? अगर आप देखेंगे तो ये जो हेडलाइंस मैंने दिखाया है, ये 2-3 महीने पहले की बात है. Delisting, stocks dip to a 14-month low, right? Stock slip. And if you see this slide carefully, the stocks have been slipping in all sectors, stock market. But this was 3 months back. What is the story now? The story is this. The story, if you look into it a little more carefully, is the story of 4 stock markets. See, Nikkei, New York Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, and Shanghai Composite Index. Over a 5-year period, अगर हम देखेंगे तो बाकी सब स्टॉक एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं, शंघाई कंपोजिट हैज गॉन डाउन. 5 साल पहले अगर आपने पैसा लगाया किसी चाइना के स्टॉक में, तो आज वही है, खत्म, यू आर डाउन. और एक्चुअल रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो ये है, ऊपर देखिए, ये है निकी और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, और नीचे हैंगसेंग यानी चाइना का स्टॉक एक्सचेंज का. फर्क देखिए, रिटर्न्स ऑन स्टॉक्स. सो चाइना का स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो रहा है. और ये तो खत्म नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा. ये 2-3 दिन पहले का डेटा है ये, और ये भी इंटरेस्टिंग डेटा है. अगर हम देखेंगे तो आप देखिए, इंडिया सेंसेक्स जो है, रिटर्न फ्रॉम जनवरी 21 टू नवंबर 22, बीच वाले देश में देखिए 11% रिटर्न्स है, एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस. आप नीचे चाइना का देखिए, -19%. जब से ये मैंने देखा है पिछले 3-4 दिन से, वही के वही है स्टॉक्स, बढ़ा नहीं आगे. कोई रिकवरी नहीं है, रिकवरी होगा भी नहीं. वो क्यों नहीं होगा, आगे हम देखेंगे, राइट. बट ओवरऑल चाइना का स्टॉक्स आर डाउन. ओके, ये देखिए, ये इनका परसों का हेडलाइन है ये, चाइना स्टॉक्स स्लाइड, यूएस स्टॉक्स ग्लाइड. विल रिफॉर्म वर्क टू स्टेम द टाइड. अभी तक नहीं हुआ, कोई रिफॉर्म ही नहीं हुआ. ओके, नेक्स्ट, हांगकांग स्टॉक रैली fizzles before Alibaba report as traders look to earnings. ओके, buyback और स्टेट सपोर्ट टू लिफ्ट सेंटिमेंट. ये कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अलीबाबा का अर्निंग्स डुबक गए, स्टॉक रैली थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन हो गया. आज के दिन थोड़ा वो इसी ब्रैकेट में चल रहा है. एक दिन किसी 20 जाएगा ऊपर, 30 जाएगा, ये डाउन है और मुश्किल है ऊपर आना. ओके, नेक्स्ट, ये देखिए, चाइना tried to stabilize the stock exchange by infusing some funds, some ये शॉर्ट सेलिंग वगैरह के ऊपर इन्होंने कर्ब्स लगाया वगैरह वगैरह, पर कुछ हुआ ही नहीं. ये भी इन्हीं का इकाई ग्लोबल का, यू नो, if you see, this is of Ikai Global. Stabilization fund is needed to boost China's sluggish stock market, economists say. But हुआ ही नहीं है कुछ. नेक्स्ट है ये केक्सन ग्लोबल का, प्राइवेट इक्विटी इन चाइना हेड्स फॉर एग्जिट्स अमिड 3 year स्टॉक स्लॉप. 3 साल का स्टॉक डाउन है, 3 साल से इनके पूरे स्टॉक्स, चाइनीज स्टॉक्स.
वो पहले भी आपको मैंने ये दिखाया, ये ग्राफ, इसमें इसमें देखिए पिछले 3 साल से डाउन है, बॉटम लेफ्ट. ओके, सो you see this is also down again. Okay, right, this is the crux. Last, अभी तक तो डाउन ही देख रहे हैं. But what is the cover story in Kexen Global? China's 3-year stock slump resists policy prescriptions for rebound. So there's no rebound. Whatever China is doing, the stocks are not going up, and this has gone on for 1 month now. आगे जाके रिकवर हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट अजीबोगरीब तरीके से ऊपर नीचे होता है. पर अगर आप सोचो, अगर आपके कंपनी में पैसा नहीं आ रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो उसका स्टॉक तो डाउन जाएगा ही जाएगा. और चाइना के सारे कंपनीज डाउन है आज के दिन. क्यों? उनका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, बिक नहीं रहा, कंजम्पशन कम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो द स्टॉक मार्केट इज डाउन. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्रैश? Look, this is important. ये इनका, there's one chap who says why China will pay a high price if it wants to only hear good news about its markets. So this is a problem in China. The Chinese people feel, not Chinese people, the Chinese rulers, they want to hear only good news. Xi Jinping सिर्फ ये सुनना चाहता है कि भाई सिर्फ चाइना है और कोई नहीं है. अगर if you want to hear only good news, nothing will happen. Markets will not respond. If you think you're done enough for the markets and the market should respond, they'll not respond again. Markets will respond as per market principles. वो तो हो नहीं रहा. Okay, and this follows a out and out communist who's talking. So when communists talk about their own market, you have to think, is this a crash or not? It's a crash and it's going to stay there for long. It's not going to come up. Okay, and you look at the global geopolitical situation, the Red Sea affair is increasing. There's no doubt about it. Okay, USA is heading into elections. They have problems. Who's going to buy from them? Europe is in a slump itself. If you see the European stocks, or we are, they are further down. So there is a problem with these stocks. They're not going to go up. Let's not have any doubts about it. ये देखिए, this is, I think yesterday or today morning, I don't remember, paper. I mean, I just took a snapshot of Kexen Global. China's regional economies underperform. Car sales monthly dip. Country Garden drops. ये सब, take anything. Vanke officials Vanke offload Shanghai Mall at discount. So property भी में discount में चल रहा है. So you take anything, any news portal, any economic portal in China today, you'll get this. You'll get depressed news. Okay? Right. Now let's look at the third crash, property crash. Property crash, we all know it started 3 years back, 2 years back really. I kept telling everyone, property will not recover. It's not recovered. And it's not going to recover. It's 30% of the Chinese economy. There's going to be a problem. And this problem is going to be severe, and it's going to pull two crashes which are very severe in this. Are the population crash and the property crash. These two will pull China down and keep it there. I'm not saying China will collapse immediately. We'll talk about it at the end. We're going to pull China down. It's like a chain which is completely pulled. आप फ्लश का चेन अगर डालोगे, पानी नीचे चलता जाएगा, फ्लश नहीं होगा. That's what's happening in China. Okay, we all know Evergrande का liquidation शुरू हो गया. But ये देखिए,
what is happening in Country Garden, which is a bigger affair than Evergrande. It has got problems. Country Garden offloads overseas projects to address debt woes. So this is the next one. इसका भी किसी दिन liquidation हो सकता है. और देखिए, China property. Once mighty developers strain for lifelines of state support after end of sector's golden age. तो बड़ा clear है. The entire Chinese media is clear. इनका China property is finished. They are on lifeline. It is not one. If you see this article in detail, it is just not one. There are about 50 developers who are bankrupt. Evergrande का liquidation हो गया, धीरे धीरे बाकियों का भी होगा. So there's a major restructuring which is happening. And if you think this is not happening, all the best, but the crash is en route. Okay. This is critical. China must shield the rest of its economy from the property contagion, and it is not able to do it because property is going to get everything down. Property गया तो cement market is down, property गया तो steel market is down, property गया तो आपका infrastructure is gone. After all, infrastructure कौन बनाएगा? Electricity, okay, all your renewable energy plants and all property के ऊपर निर्भर है काफी हद तक. आपका electric fittings वगैरह. There's so many other markets. Your financial markets are down. That contagion is going to affect them. Can China do that? So far, no. They are not able to do it. That is why it has affected other sectors. And just think. Look at this property. Look at people. The amount of property which China has is more than what its people require today. In a case where the population is going down, there is no way that China needs more property, more houses, more flats. So the demand will naturally go down. And if the demand is going to go down, how will this property get revived? Some revival will be there here and there, but macro revival, 30% of your economy has to be shifted out into something else. 30% of your GDP, $17 trillion mein, 30% is how much? $5 to $6 trillion. That is sick. So when you talk of $17 trillion economy of China, you must understand $6 trillion of that is a sick economy. It is negative return. Okay? Economic, you can say, keep saying, talking of GDP, but it's negative. So that's the first thing. So that's property for you. Again, two crashes which are going to pull China down, and they're not going to be amenable to recovery are population and property. And both of them are going to pull and they are interconnected. Population is the core of your economy. Property is 30% of your economy. Okay. Next, deflation. There's a consumer crash. Okay. And deflation is taking place. There's the fourth crash. We all know about bulls and the bears. But deflation is the 500-pound gorilla. And this 500-pound gorilla is now climbing onto China's back. How this will sit on China's back and keep it depressed is the issue. The reflection of this 500-pound gorilla is in the stock markets, which have already crashed. So one crash is a symptom for the other and the cause for the other. They're interconnected. So there's a problem here. Right? So let's have a look at it further. You look at it.
आप देखिए इसको, इनके ये फाइनेंशियल टाइम्स, फोर्ब्स, CNN बिजनेस, चाइना एक्सपोर्ट डिफ्लेशन, चाइना टू एक्सपोर्ट डिफ्लेशन to the world's as the world economy stumbles. Okay, it's going to give you their deflation is going to be exported to many other countries. China's deflation, Forbes says, another tell of serious economic trouble. CNN Business says China sinks deeper into deflation as prices fall at fastest rate in 15 years. It's not a joke. Okay, what is this? Is Reuters. He says China's consumer prices suffer biggest fall since 2009. So there is deflation which is already set in. That 500-pound gorilla is sitting on the everything. Okay, this is from China. He still talks of China. He says China inflation is the heading, but demand led reflation. He doesn't talk deflation, he talks of reflation. As consumer prices suffer steepest fall since 2009. So this consumer prices falling is being reflected across the divide in the West and within Chinese media. So it's true. So there's deflation. And what does this say? This is the inflation rate, but it is a negative territory. So obviously it's deflation. You look at it. Look at where the line has gone. Food deflation. देखिए आप. Headline CPI. Everything is down. Everything is below zero. Between 22 and 2002 and 2022 and 2024. From 23 onwards, you all see all lines going down. Okay? And look at this inflation, factory gate inflation. Factory gate inflation is that inflation which tells you whether the factory prices are going up or down. And if you look at it, it's gone down. It has come back, it's stabilized, but still below the normal. This is not going to again go up. So if this doesn't go up, if the factory price don't go up, and your factories and your firms don't make money, and they don't have profits, the stock prices will go down. It will not go up. See the connect. And if the factories don't make money, the wages will go down. If the wages go down, people can't buy. There you are. Okay. Look at this. How is it affected? China's financially unhealthy small firms have a serious cash flow that threatens to topple more dominoes as per their own survey. So that means whatever money they've, because they don't have money, their cash flow is not there, factories are closing up. Why is cash flow not there? Consumer prices have gone down. Why has consumer prices gone down? People don't have money. Very simple. I mean, if you see, there's a cycle which is happening in China, which for us outsiders, we don't understand. That's why I categorized it each. Okay? Which is the next crash. And this is a major crash. This is the third major crash. The other crashes are reflective crashes. But property, population, and crash of confidence, major. What does Xi Jinping say? ये तो फ्लैट हो गया. आत्मविश्वास का प्रॉब्लम क्या है या है क्या? You don't understand. आत्मविश्वास का प्रॉब्लम तब होता है जब पॉलिसी, गवर्नमेंट के पॉलिसी ऐसे होते हैं. अगर हमारे गवर्नमेंट में ने कल के दिन कोई उल्टा फुल्टा पॉलिसी जारी किया तो हमारा कॉन्फिडेंस तो डुबक जाएगा.
और ये प्रॉब्लम चाइना में खास करके है, क्योंकि यही देखेंगे, a crisis of confidence is gripping China's economy. Okay, then Wall Street Journal says China's crisis of confidence in 6 charts. If you see those charts, they're mind blowing. And these two started about 6 months back, 6, 7 months back. Okay, China's disappointing economic figures and the crisis of confidence. The last one on the right is South China Morning Post from China 3 days back. What does it say? Why is China mixing its economic messages when business confidence is so low? They're talking of low business confidence. Okay? And this was a very telling article. इसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूं. This is a tweet by Michael Pettis. And this article, if you see, right, this was about 2 months back. It shook me up. It shook me up when I read it. Purely for the starkness. क्लियर बता दिया कि यह प्रॉब्लम बहुत है, और थोड़ा इसको नजदीक आप पढ़िए व्हाट माइकल पेटिस सेज. It has become a powerful consensus here in China that consumption is weak because confidence is low. Confidence is low because the economy is sluggish, and the economy is sluggish because consumption is weak. पूरा गोल चक्कर, one tailing into the other. So overall, they are in a problem, and this is not going to come out. Right? Okay, let's see what are the other factors. Look at this. People don't want to invest anywhere. As per Nikki, China's gold purchases soar 30% on economic anxiety. Okay, this is what South China Morning Post says. China's gold rush. World-leading jewelry surge shows how other investments have lost their shine. So people don't want to invest in stocks. People don't want to invest in property. People are rushing for gold. Overall anxiety. ये तो true for us also. अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, वो डुबक रहा है, आप स्टॉक्स में आप खरीद नहीं सकते हो, और वो भी आपको रिटर्न नहीं दे रहा, स्टॉक्स नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आप गोल्ड ही खरीदोगे. वो ही हो रहा है चाइना के अंदर भी. तो मार्केट क्यों बढ़ेगा? मार्केट नहीं बढ़ेगा. राइट? सो देयर आर issues which we have to understand in China beyond the normal. Okay, what are the positive factors? क्यों हो रहा है ये सब? Youth unemployment, picture still blurry, social and economic risks, joblessness. देखिए, बात यह है कि चाइना ने उनका अपना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, उन्होंने देना बंद कर दिया. एक 4 महीने पहले बोल रहे थे कि ये इट इज एट 24-25%. 3 महीने उन्होंने आउट कर दिया, फिर नॉर्मलाइज करके बोले नहीं नहीं, ये 14% ही है. तो झूठ. पर एक्चुअल जो भी हो, परसेंटेज छोड़ो, लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, जो जाएगा कहाँ आगे? तो ये सब कॉन्फिडेंस तो होगा ही नहीं ना. आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट प्रेशर वर्सनिंग दिस ईयर इन एब्सेंस ऑफ सॉल्यूशन टू स्टोर अप जॉब्स. नौकरी क्यों नहीं है? फैक्ट्री बंद है. फैक्ट्री क्यों बंद है? कोई सामान नहीं ले रहा है. वो सर्कल हो रहा है. तो कॉन्फिडेंस, ओवरऑल कॉन्फिडेंस डाउन है. ओके ओके, ये उसके ऊपर जी जिनपिंग जी है. ये कहता है डिसरप्टिव इनोवेशन. इसका आइडिया है ये, भाई डिसरप्टिव इनोवेशन करो. ये क्या है डिसरप्टिव इनोवेशन? भगवान जाने, मेरे को नहीं पता चला इसको पूरा पढ़ के. शायद शी जिनपिंग को पता है,
क्योंकि चाइना को पता नहीं चला आज तक। तो ये आता है ऐसे ड्यूअल सर्कुलेशन, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, डिसरप्टिव इनोवेशन वगैरह वगैरह। ओके, ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। With China's economic plenum still unscheduled, observers worry politics remain in command. एक नॉर्मली 2 महीने पहले इनका इकोनॉमिक प्लेनम होना था जिसमें ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना था, और इट्स इकोनॉमिक फोरम। 3 महीने से दिस इकोनॉमिक प्लेनम हैज नॉट बीन हेल्ड। कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा चाइना का लीडरशिप, और ये ओपन सीक्रेट है। क्यों? पॉलिटिक्स। Xi Jinping is not convinced about the economic model of China. उसके मुताबिक चाइना का इकोनॉमी अच्छा है। He wants to improve the real economy and make China into a financial superpower. कैसे बनाएगा ये भगवान जाने। उनके जो पॉलिसीज डोंट गिव कॉन्फिडेंस लोगों को, ना मार्केट को। ओके, ये एक अकेला नहीं है। China's slow response to economic turbulence leaves market bewildered. Where do we go from here? कहाँ जाएं? जाएं तो कहाँ जाएं? आम आदमी ये पूछ रहा है। एक जगह वो पिछला इसमें बोला we do not dare to spend. यहाँ बोल रहा जाएं तो जाएं कहाँ? As policy changes remain elusive, the policy changes to kickstart the economy are not there. Okay, anti-corruption ये भी चालू है। So if someone is doing anything, वो anti-corruption net में आ गया तो he's gone. So that's another issue which China has to face. Right? China vows to boost farm output, seed research in renewed food security, tech self-reliance push. This keeps coming every 3 months. China is not self-reliant or self-sufficient in food or food-related technology. So, I mean, you can time it to the 3rd month, it will come out. This came out about 5-6 days back. They have a problem, and this keeps repeating, and there's no solution. Okay. Now there is this problem of spying. Okay. New spying law has foreign firms scratching their heads. Some scrambling like a scared monkey. So foreign firms are not interested in coming to China and investing. Okay. Why? The new spying law puts tremendous restrictions on them. उस स्पाइंग लॉ के मुताबिक दे हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, सब कुछ। और उनके साथ जो भी काम करता है लोकल, उनका भी डिस्क्लोजर चाहिए, उनका मुआयना होगा अंडर अ ग्लास, लुकिंग ग्लास, राइट? सो देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द इंटरनेशनल व्यू। Economy faces high uncertainty. Okay, all this you leave the growth out. Why is this high uncertainty there? Uncertainty इसलिए है क्योंकि इनके पॉलिसीज ठीक नहीं है, एक। दूसरा, ट्रस्ट नहीं है, इनके डेटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अनसर्ट डेटा, द डेटा इज नॉट क्लियर, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अनसर्टेनिटी। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज लाइक दैट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। एक दिन 25% था अनएम्प्लॉयमेंट, अगले दिन 24% हो गया। So no one knows what is the truth in China. Then there's a consumption crash. Consumer demand वगैरह तो ठीक है, consumption का crash भी है। If you see, the China consumption story is over. People in China have stopped consuming. They are not able to shift to a consumer economy. What does that say? China's weak consumption growth is as much a cyclical issue as a structural one. China's household consumption, this is important. This is their natural cycle. China's household consumption to GDP ratio has been standing at 56%.
compared to 66% in India and 67% in Thailand. The average consumption to GDP ratio in most advanced economies is around 80%. ये भी थोड़ा झूठ है उनका खुद का. It's actually around 50% in China consumption. Some, uh, I think some of their media calls it even 40%. So their consumption is not there. Unless their consumption goes up, their economy can't revive. Now, last one, the trick of the trade. China developed the economy by using high household savings to subsidize entrepreneurs. Loan. Very simply put, मैं एक काम करने वाला हूं, मेरे को वेतन मिलता है, मैं खर्च नहीं करता, मैं बैंक में डाल देता हूं. बैंक में डाल दिया तो वो पैसा लेके हाउस होल्ड सेविंग्स किसी कारोबार में बैंक ने लोन दे दिया, और दैट इज सब्सिडाइज्ड एट चीपेस्ट रेट्स, so that that guy who can produce it at the cheapest rates. And once he can produce it at the cheapest rates, once he produces it at the cheapest rates, he can export it at the cheapest rates and then flood the market international. This model has done one thing. It means that the person who, who's subsidizing the whole thing doesn't consume. If today I start consuming, a major part of my salary will go into consumption. It will not be there available in bank. If it is not available in bank, it can't be given as a loan, as a subsidy to people. If it is not given as a subsidy, Chinese exports will not be competitive. So how can you? This is a log jam which China cannot undo. It's not able to undo. That is why it is going down. And of course, to forget about the other issues like your geopolitical problems, etc., etc., etc. Okay. Then debt crash. Look, everything which is happening in China is making the आम आदमी poor. आम आदमी गरीब हो रहा है चाइना के अंदर. कुछ भी हो या ना हो चाइना के अंदर, आम आदमी गरीब हो रहा है, चाहे उसका जीडीपी बढ़े ना बढ़े. जी जिनपिंग चाहता क्या है? जी जिनपिंग चाहता है कि अमीर देश हो और गरीब लोग हो, और ये है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसका. ओके. ये भी कैक्सनिया इकाई का है. मैं थोड़ा नजदीक देखता हूँ, नजर नहीं आ रहा. ओके, दिस इज इकाई. इट सेज local debt problem needs a comprehensive solution. So there's a big local debt problem, and there's no solution for that at this point of time उनके पास. Right? You see this. What is this? क्या है ये local problem? आप देखिए पिछले कितने साल से है ये. राइट, 2005 से देखिए कितना डेट इनका बढ़ गया लोकल गवर्नमेंट्स का. राइट, मेरे ख्याल में 100 गुना या 150 गुना बढ़ गया डेट. लोकल गवर्नमेंट्स कैन नॉट रीपे बैक. मैं इसको समझाता हूं थोड़ा. लोकल गवर्नमेंट्स जीडीपी बढ़ाने के लिए इन्होंने डेट लिया है, उधार लिया है बैंक से, इधर से उधर से. आखिर ये बैंक भी कहां से लेते हैं? आपसे और मेरे से, यानी कि उनके लोगों से, हाउस होल्ड सेविंग्स. वहां से ले लिया पैसा, ठीक, और रोड बना दिया. जीडीपी बढ़ गया आपका, क्योंकि उधार ले लिया, रोड बना दिया, ये वो सब कुछ. पर वो रोड से आपको मुनाफा चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम चाहिए. वो तो होता नहीं है, क्योंकि उस रोड के ऊपर कारोबार नहीं लगा, आपका टोल टैक्स नहीं बना, एक्स वाई जेड बहुत तरीके, बहुत चीजें हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया आपने, जिससे रिटर्न ऑफ इनकम नहीं है. अगर आपने रोड बनाया एक प्रॉपर्टी गोस्ट टाउन के अंदर, उस रोड से क्या मुनाफा होगा आपको? तो वो कर्ज तो कर्ज रहा ही है ना, वो जाएगा नहीं कहीं. और ये इतना बड़ा हो गया, ये चाइना का आधा डेट जो है ये लोकल गवर्नमेंट डेट है. अगर लोकल गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं देता तो आम आदमी नुकसान उठाएगा. आम आदमी का के ऊपर बोझ है ये. जब तक लोकल गवर्नमेंट डेट क्लियर नहीं करेंगे,
They cannot start new infrastructure projects. किसी तरीके से देखिए, ये 1-to-1 मिक्स्ड है सब कुछ। एक्सपोर्ट क्रैश, सबको पता है एक्सपोर्ट क्रैश है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्सपोर्ट्स क्यों क्रैश हुए? वो एक्सपोर्ट्स इसीलिए क्रैश हुए हैं क्योंकि बाहर इन्होंने डी-रिस्किंग चल रहा है ईयू के साथ, और डीकपलिंग और डी-रिस्किंग हो रहा है ईयू और यूएसए के साथ, मेन मार्केट्स इनके। ये अफ्रीका उफ्रीका से में जो बेचते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो बेचते हैं, वो नंबर 2 माल बेचते हैं। नंबर 1 महंगा माल वहां जाता है, पैसा वहां मिलता है इनको। वो तो क्रैश हो गया। ऊपर कोविड की वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो गया, लोग खरीद नहीं सकते, एक्सपोर्ट क्रैश हो गया। इनका एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन में एक लिंक है। एक फैक्ट्री मान लो साबुन बना रहा है, वो साबुन आम आदमी लोकल भी खरीदेगा, मेरे जैसा भी खरीदेगा कि भाई चाइना का माल है, सस्ता है, ले लूंगा, बाहर एक्सपोर्ट है। अगर कल के दिन इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई है, हो गया, या भेदभाव हो गया जैसे है, और हमारे देश में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन लग गया कि भाई कल आप चाइना का साबुन नहीं खरीद सकते हो, मैं खरीदूंगा नहीं, और अंदर बिक नहीं रहा, तो साबुन का फैक्ट्री टप हो गया। साबुन का फैक्ट्री टप हो गया तो अंदर बेचने का भी सवाल ही नहीं है। वही कहानी है, आप साबुन की जगह कार लगा दो, कार की जगह स्टील लगा दो, कोई भी सामान लगा दो। इनका पूरा टॉय टॉय का बहुत बड़ा सिस्टम था, वो सब कोलैप्स हो गया, एक्सपोर्ट्स। और टॉयज कहाँ जाते थे? यूरोप और यूएसए, राइट। तो यही ये नहीं है, ये देखिए, एक्सपोर्ट फेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years as domestic demand dips, double whammy, domestic demand भी डाउन, एक्सपोर्ट्स भी डाउन। यही कहानी मैं पिछले आधा घंटे से बता रहा हूं आपको, राइट। निकी एशिया, चाइना's annual exports drop for first time in 7 years। ये सब पिछले हफ्ते की बात है, ये सब पिछले हफ्ते में, ये सब मैंने इकट्ठा किया, कुछ पुराने, टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, बट ऑल दिस इज हैपनिंग। इफ यू सी, देखिए, एक, व्हेन यू सी अ पिक्चर, एक पिक्चर देखोगे तो आपको वही नजर आएगा, बाकी सोचोगे नहीं। पर अगर आप पूरा पिक्चर, अगर आप पूरा देखोगे, थोड़ा दूर हटके पूरा टाइल्स सारे देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा टाइल्स का क्या हालत है। सारे बदली करने हैं या सिर्फ एक टाइल बदली करना है? इस कहानी में ना सारे टाइल्स खराब हैं। यही मैं दिखा रहा हूं आपको, बाय क्रैश बाय क्रैश। और ये सब क्रैश हो रहा है तो चाइना का खाप कहाँ जा रहा है वो देखेंगे। ये देखिए, एन यूएस एनुअल गुड्स इंपोर्ट डाउन, वो ऊपर वाला लाइन यूएस का है, डाउन, बिल्कुल डाउन आज के दिन। ओके, चाइना मंथली एक्सपोर्ट्स डाउन। बीआरआई तो बड़ा क्रैश है, ये पहले ही क्रैश हो गया। नेक्स्ट, राइट। ये देखिए बीआरआई का इन्वेस्टमेंट्स कितने डाउन हो गए, वो ब्लैक लाइन को देखिए, कितने प्रोजेक्ट्स डाउन हो गए। ओके, ये अभी cash corruption, crumbling dams, that's China's Belt and Road Initiative 10 years on। ये पिछले साल का है ये। सबको पता है बीआरआई डाउन है। अगर बीआरआई डाउन है तो आपका सामान भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है बीआरआई के अंदर, इट्स ऑन स्टैंड स्टिल। सिर्फ ये है कि बीआरआई की वजह से इनको जियोपॉलिटिकल पुल आ गया है काफी हद तक, बट नथिंग मोर देन दैट। ओके, ओके। आर्टिकल्स अगर आप नेट में जाओगे तो ये राइज एंड फॉल ऑफ बीआरआई के ऊपर बहुत आर्टिकल्स हैं, पर आज के दिन ये फॉल में ही है, ये क्रैश है, ये 9th क्रैश। ओके, इटली हैज आल्सो पुल्ड आउट ऑफ बीआरआई, ये सबको पता है। दे वर थिंकिंग दैट इटली इज द ओनली यूरोपियन एंड पार्ट ऑफ G7 व्हिच वाज पार्ट ऑफ जी बीआरआई, वो भी आउट हो गया। ओके, अभी क्या है, मेजर प्रोजेक्ट्स जोड़ रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सिल्क रोड, ये वो हाथ बार में आते हैं।
किसके पास जा रहे हैं? गरीब देशों के पास। कोई अमीर देश इनको लेने के चक्कर में नहीं है। देखिए, फाइनल, अगर यू टेक अ समरी, पीपल आर पोरर, फॉलिंग वेजेस, लैक ऑफ जॉब्स, फॉलिंग प्रॉपर्टी एंड लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स। ये लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स क्या है? ये लोकल डेट। लोकल डेट क्या है? इन्होंने बॉन्ड बना के लोगों को दिया, लोगों ने खरीद लिया, वो डाउन है सब, वो पैसा नहीं है किसी के पास। पीपल आर गेटिंग होल्डर, हेल्थ केयर है ही नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन में इनका पॉपुलेशन कम ही नहीं हो रहा है, बुजुर्ग भी हो रहे हैं। इंटरनल इकोनॉमी इज वीक एंड पीपल डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, ये मैंने पहले बता दिया आपको। जी, फाइनेंशियल सुपर पावर थ्रू द रियल इकोनॉमी, ये बोल चुका है, बट ये है क्या किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग व्हेन देयर इज नो वन टू बाई, ये अभी भी मैक्सिमम लोन्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं दे रहे, मैन्युफैक्चरिंग करो। किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन खरीदेगा, किसी को नहीं पता। फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज में जा रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, मिलिट्री में करप्शन है, ये सब हमने बता दिया। तो ये है हालत चाइना का, चाइना ड्रीम, ये है चाइना ड्रीम। ये काप तो बड़ा भयंकर निकल रहा है। ओके, एक ये आर्टिकल निकला था 2-3 महीने या 4 महीने पहले बाय पॉल क्रुगमन, जो एक नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट है। Why is China's economy crumbling? New York Times. What does it say? Very important. ये बार बार मैं पढ़ता रहता हूँ। China's rulers have long relied on economic achievement to give them legitimacy. Now they are facing trouble on the home front, most immediately in the form of rapidly rising youth unemployment. How will they respond? आज तक response नहीं है. You don't have to study much history to be aware that autocratic regimes sometimes respond to domestic difficulties by trying to distract the population with foreign adventurism. Ladai. China's domestic problems make it more, not less, of a danger to global security. Understand this. This is a Nobel laureate. He is a Nobel Prize winner in economics, and he's spoken this. When? 3-4 months back. Now the economy is even worse. He spoke of this when the economy was tumbling and he foresaw. If you see his earlier articles and connect it up, वो graph बनता है down. So that's what he's spoken, right? अगर आप यूएसएसआर मॉडल कंपेयर करें और चाइना का मॉडल कंपेयर करें, यूएसएसआर क्यों लुढ़क गया और चाइना का क्या है, आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बारे में एक अलग हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जब मौका मिलेगा मेरे को। But if you see the USSR model and then see the China model, they're almost the same today, barring a few. There's a lot of similarity. Lot of similarity. In fact, ये छोटे छोटे जो मैंने लिखा है in brackets are what I have written today morning. ये जो comparison मैंने आप लोगों के साथ दिखाया है, I did about 4-5 months back. ये टेबल मैंने दिखाया, वो मैंने चेंज नहीं किया कुछ उसमें, सिर्फ आज I have added. For example, in USSR, communist opacity hid hollowness. It was hollowed out, their economy. China model. 3 months back or 4 months back, whenever I showed this, I wrote hollowness under development. Today, same opacity is there in Chinese economy. Everything. Look at that red one. Inefficient government-owned factories could not produce what the people wanted, and what the people needed was not produced. There is a similarity in China happening. So when people say that China will not collapse, you have to rethink. If USSR collapsed overnight without a thought, can it not happen to China? It can, but in a different way. That's why you correlate what I have said today with what I spoke with General Narayanan, the slow collapse of China. China is going through a slow collapse because they know what happened to USSR.
They're trying to control the collapse, but that's happening, and in my way, it's irreversible. The 10th crash will happen with the middle class. I took one on the middle class. Okay? Vulnerable middle class. I thought that was the end of the story. ठीक है, मैंने program कर लिया. Day before yesterday, this comes out. China's middle class, key to Beijing's economic recovery plan. Right? It's the key to the recovery plan. Put spending on hold over wealth income concerns. So the middle class is in a crash. That's the next crash if it happens. I'm now tracking their middle class also. Till about 15-20 days back, this is not my focus. For the first time, a slew of articles came out on middle class. Now we are tracking it. Because if the middle class goes, China is in a collapse. Okay? So what Xi Jinping wants? A rich country with poor people. This is it. This is my final cartoon. Okay? Stock market investors sub भाग रहे हैं. So I'll now take some questions and then we'll see where it goes. I hope you people have liked this presentation. I hope you like this whole show. If you liked it, please press the like button. If you're impressed by it, tell others to subscribe to my channel. I do in-depth analysis. Okay, I do it largely from Chinese sources. Right? I mean, I don't know Chinese, so I don't know Mandarin. So when I go to these Chinese websites, invariably I do translation in Google and then show it to all of you. And but the headlines I pick from South China Morning Post, because invariably whatever comes in the Mandarin news a week before, a week later it comes in South China Morning Post. Economically, you look at Yikai Global or Kexin Global, you come to know.